Good evening. I am Anil Aggarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, for group discussion, I have given one topic today: why deposit growth is low and how deposit growth can be picked up. And I ask you to give your views. Now, after reading these views, I find that most of you have given very casual answers. And why these answers are casual? From these answers, one can make out that most of you are not keeping any track of financial news that is coming on your way for last 2-3 months. Although we are posting video news of the day daily, and I am covering that news, and I always advise you to read Economic Times, Business Standard, Financial Express, or Mint if you are looking for a bank job. Now, if you are preparing for a prestigious institution like State Bank of India, a layman answer will not help you. Okay? So, your answer has to be something different. Your answer, your participation in group discussion should be of a person who seems to be knowledgeable. So, now the first thing of group discussion is understanding the topic. The topic was why deposit growth is low, and second part was how deposit growth can be picked up. Now, most of you only discussed about your view of low deposit growth, but how this can be picked up, you have not discussed. Okay, so means your focus on the topic was not complete, it was partial. So whenever group discussion topic is given, listen that topic carefully and try to cover the entire topic instead of part of it. This is the common mistake committed by candidates. Now, the topic is why deposit growth is low. So as far as growth is concerned, it is low, it is a statistical data. Okay? But why it is low? So first thing we have to understand, what is the source of deposit? From where deposit comes to the bank? The deposit comes from the income level of individuals and others. So if a person is earning less, so his or her capacity to save is also less. If a person is earning more, he, after meeting his or her expenses, he will have surplus fund, and these surplus funds will be deployed across various assets, maybe financial or non-financial. So the first thing is we have to start our answer with the income level of people in 2025 vis-a-vis 2024. And the income is related with the GDP growth, the activities that is carried out in a country. So if we look at the GDP growth of 2025, this is much lower than GDP growth of 2024. Indirectly, it means that the income level of the people have grown at a lower pace in financial year 2025 as compared to financial year 2024. So if incomes have increased at a slower pace, naturally the money available for deployment under various assets, including bank deposit, that is part of financial assets, and non-financial assets, will also come down. So one of the reasons for slower growth in deposit is lower growth in income level of individuals and others. This is one. Second is credit growth gives the money multiplier factor. That is an economic term. So credit creates deposit and deposit creates credit. Okay? Because the credit from one bank will become deposit of bank B, because the customer who is seller
will get the money from the buyer and the buyer will take the loan. So the moment more loan is given, that means more money is going to the seller bank and it result into deposits. So since during this financial year, credit growth has come down below 10% from more than 19% in the preceding year, it has resulted into lower deposit growth. So lower credit growth is one reason for lower deposit growth. But the question is why lower credit growth? Some people will say since banks are not having money, that's why this is a reason for lower credit growth. No. Credit growth is always dependent upon demand of goods by the people. When demand of goods is less, so the credit requirement will also come down. So if credit growth is low, that means people have purchased less assets during the financial year, less non-financial assets, maybe cars, maybe house, maybe other things, and that might have led to lower deposit growth. The third thing is income has various sources. Now, the most of the youth population in the country was getting handsome income from share market till June or July 2024 because market was rising, rising and rising. So on one hand, they were having fixed income from their service or business or otherwise, and the second income was coming on account of capital gain from share market. And because lot of people are now invested in mutual fund or share market, so their income levels have reduced drastically after June, July 2024, and many of them are in losses now. So if they are in loss or their gain from the share market or financial market is less, naturally they have less money to keep it as deposit. So that has also resulted into lower income at the hand of individuals and others and ultimately resulted into suppression of deposit growth in the banking sector. Then another important thing is where was the focus on the financial assets or the non-financial assets. In financial assets, we classify like deposit, then shares, then debentures, bonds, mutual funds, etc. But non-financial assets are like gold, house, and other assets. So we find that there was a abnormal rise in the price of gold, and that attracted lot of people to buy gold. And since many people purchased the gold during the year, and gold being an imported item, the lot of money has flown out of country to other countries. Those have exported gold to our country, and that has also resulted in diversion of money from the financial assets to the non-financial asset like gold and ultimately affected the deposit growth. Then another important factor is fall in interest rates. Whenever there is a decline in interest rates, maybe deposits, maybe other thing, it result into disincentive for a investor or for a depositor to give money as a deposit to the bank because he looks for alternatives. And in alternatives, he or she might have shifted the money to share market, to mutual funds, to gold, or to other assets where he is expecting higher return, although the higher return has not come in last 7-8 months. But still, with the hope of higher returns, the money distribution might go to those assets. That may be one of the reason in fall in deposits. Now, what is to be done to improve the deposit growth? So, most of the actions are required at government level. Here, banks will not be able to do much of the thing
accept interest factor. But as interest rates are market dependent, so even by increasing the interest rates, it will be counterproductive for the banks because it will dent their profitability. So they are constrained that they will not be able to raise the interest rates. That means the real remedy lies on the areas where what is the source of deposit. That means the government should work in improving the GDP growth. Government should focus on more and more job creation so that more and more income is created and ultimately that money flows as a saving to the banking sector, and the banks can increase the credit growth in coming months provided demand for goods increases. So government has to create an environment where demand of goods increases in coming month. That can help us. So at the level of banks, the only thing is improving the customer service, giving more and more products where bank can increase their saving accounts and leverage the profitability. So this is some ideas I have given. You can add on the ideas. My purpose of this session is to show what should be your thought process. The thought process should be different than ordinary. So I have tried to give you some examples where I have given you some thought process. This is different than normal. Okay, so God bless you all. We will be discussing more topics in coming days. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मैंने आपको एक टॉपिक दिया ग्रुप डिस्कशन के लिए और टॉपिक ये था कि बैंकों के डिपॉजिट्स ग्रोथ लो क्यों है और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए. अब जब मैंने उसके आंसर्स पढ़े हैं तो मोस्टली आंसर मैंने ये देखा है कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनको या तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है या वो जो रिसेंट इवेंट्स हैं उस न्यूज़ को चेज नहीं कर रहे हैं. क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, मिंट पढ़ो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ो. मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने वो पढ़ा है. इसी तरह जो न्यूज़ ऑफ द डे के अंदर हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी लोगों ने देखी है. इसीलिए जो आंसर है उसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि रियल रीजंस को आप डिस्कस कर रहे हो. आप वो रीजंस डिस्कस कर रहे हैं जो सबको पता है. आप डिफरेंट नहीं नज़र आ रहे हो. उसके अंदर कहीं भी आंसर के अंदर डेप्थ नज़र नहीं आ रही है. जो एक कॉमन मैन बात कर रहा है कि इस वजह से गिर गया होगा, मतलब एक हाइपोथेटिकल सा वो आंसर प्रतीत हो रहा है जो ग्रुप डिस्कशन में आपकी अच्छी इमेज नहीं बनाता है. आपकी अच्छी इमेज तब बनती है जब आपके आंसर के अंदर गहराई हो, जब आपका आंसर डिफरेंट हो और आपका आंसर उन बातों को कवर करता हो जो कि रियल कारण हो सकते हैं उस डिपॉजिट ग्रोथ के कम होने के लिए, और वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. जब तक हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारा आंसर पूर्ण नहीं होगा. तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि अगर डिपॉजिट ग्रोथ कम है तो ये डिपॉजिट आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है. क्या वो सोर्स इंटैक्ट है या वो सोर्स ही हिल चुका है. तो जो डिपॉजिट कहाँ से आता है, बेसिक चीज़ है इनकम. अगर मेरी आमदनी है उससे मैं कुछ खर्चे करता हूँ और जो पैसा बचता है वो मैं डिपॉजिट की शेप में बैंक के अंदर या किसी अन्य फाइनेंशियल एसेट या नॉन फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करता हूँ. ठीक है. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या इनकम लेवल बढ़े हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, क्योंकि ग्रोथ तो ईयर ऑन ईयर देखी जा रही है. तो अगर हम जीडीपी का आंकड़ा देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ थी वो 9% से ऊपर थी और 2025 में घट के रह गई 6.5% मान लीजिए. तो जो जीडीपी ग्रोथ ही लोअर हुई है, अगर जीडीपी ग्रोथ लोअर हुई है तो जो इनकम ग्रोथ भी लोअर हुई है. अब जब इनकम ग्रोथ लोअर हुई है तो जहां इनकम से जो पैसा डिपॉजिट में आना था वो नेचुरली कम आना था और वो कम आया. तो रूट कॉज क्या है, लोअर इनकम ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं.
तो एक कारण तो क्या हुआ कि जीडीपी ग्रोथ जो लोअर है, वो नजर आ रहा है कि इनकम भी कम बड़ी होगी। ठीक है, दिस इज वन। दूसरा रीजन क्या होता है? क्रेडिट ग्रोथ। इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्रेडिट ग्रोथ है वो मनी मल्टीप्लायर का काम करती है। तो जब भी क्रेडिट ग्रोथ लोअर होती है तो ये मनी मल्टीप्लायर फैक्टर श्रिंक हो जाता है, और जब क्रेडिट ग्रोथ हायर होती है तो मनी मल्टीप्लायर फैक्टर हायर हो जाता है। अब क्योंकि पिछले वर्ष क्रेडिट ग्रोथ आ रही है 9.8% और उससे पहले वर्ष है 19.9, मतलब जो रिसेंट है वो 9.8 है और उससे पहले है 19.9, मीन्स क्रेडिट ग्रोथ आधी हुई है। तो जब क्रेडिट ग्रोथ आधी हुई है तो उसका डिपॉजिट ग्रोथ पे असर पड़ना ही था। अब आप हैरान होंगे, डिपॉजिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। क्रेडिट से डिपॉजिट बनता है और डिपॉजिट से क्रेडिट बनता है। ये दोनों वाइस वर्सा कंसेप्ट हैं जो साथ साथ चलते हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए समझिए कि एक व्यक्ति ने ए बैंक से लोन लिया, तो वो बायर है और ये पैसा वो किसको दे रहा है? सेलर को, जो बी बैंक का कस्टमर है। तो जब वो ए बी को पैसा देगा तो वो बी बैंक का डिपॉजिट बन जाएगा और ए बैंक का लोन बन जाएगा। तो अगर लोन कम दिया जा रहा है तो डिपॉजिट भी कम ग्रो करेगा। ठीक है, और डिपॉजिट कम है उसकी वजह से कम क्रेडिट दिया है, वो भी एक कारण हो सकता है। मगर ऐसा कारण भारत में नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी क्रेडिट की डिमांड है उसको कभी सप्रेस नहीं करते बैंक्स, उसको मीट करते हैं, चाहे डिपॉजिट से करे चाहे वो खुद बारो करके करे। क्रेडिट ग्रोथ कम इसलिए है क्योंकि डिमांड ही नहीं है गुड्स की। लोगों ने कम कारें खरीदी हैं, लोगों ने कम एसेट्स खरीदे हैं, जो कि जीडीपी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड ही नहीं आई तो क्रेडिट नहीं बढ़ा, क्रेडिट नहीं बढ़ा तो वो डिपॉजिट को भी नीचे ले गया। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर हम देखें लगभग जून जुलाई 2024 से शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट आई, और उससे पिछले 3 सालों में खासकर जो यंग जनरेशन है उन्होंने बहुत पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और वो निरंतर शेयर मार्केट से कमा रहे थे। मगर जून जुलाई के बाद जो यंगर जनरेशन है उसमें से मोस्टली या तो लॉस में है या इनकम नहीं जनरेट कर पाए हैं। तो जो उनकी एडिशनल इनकम थी, एक तो जो उनका बेसिक सर्विस है या बिजनेस है वहां से इनकम आ रही थी, और एक शेयर मार्केट से इनकम आ रही थी। तो शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से जो आमदनी उनको आ रही थी पिछले कुछ वर्षों में, वो इस वर्ष नहीं आई। काफी लोग लॉस में हैं। तो जो वो इनकम ऐड ऑन होती और उस इनकम में से जो सरप्लस बचता वो डिपॉजिट बनता। अब क्योंकि इनकम लेवल गिर गई, एक तो बेसिक इनकम गिरी क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी, और दूसरा जो एडिशनल इनकम थी शेयर मार्केट से या इन्वेस्टमेंट से वो भी लोगों के हाथ में नहीं आई। वो भी एक कारण है डिपॉजिट ग्रोथ के ना बढ़ने का। अगला जो रीज़न है डिपॉजिट ग्रोथ के ना होने का वो है कि इस साल गोल्ड की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी, और उससे क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल एसेट्स में लगा हुआ पैसा था वो मूव कर गया नॉन फाइनेंशियल एसेट लाइक गोल्ड में। और जो गोल्ड है वो मेजॉरिटी इंपोर्ट होता है, और जब ये गोल्ड की डिमांड बढ़ी देश के अंदर तो ये जो पैसा गोल्ड का है वो देश से बाहर चला गया, क्योंकि हमारे देश में गोल्ड की प्रोडक्शन बहुत कम है, मेजॉरिटी गोल्ड इंपोर्ट होता है, और पिछले वर्ष में बहुत अधिक गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। तो उतना पैसा देश से बाहर चला गया, तो कहाँ से निकला होगा? लोगों के अकाउंट से। तो उतना वो डिपॉजिट ग्रोथ को डेंट दे गया। इसी तरीके से जब जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वो भी एक कारण बनता है कि वो एक डिसइंसेंटिव का काम करता है। लोगों के लिए कारण नहीं रहता कि हम बैंक में डिपॉजिट दें, उनको लगता है हम वहाँ पैसा लगाएं जहाँ पे संभावना है इससे ज़्यादा रिटर्न आने की। तो वो एक प्रोपेंसिटी होती है कि हम शेयर में लगा दें, हम म्यूचुअल फंड में लगा दें, हम गोल्ड में लगा दें, वहाँ शायद ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, जबकि आ नहीं रहा अभी। मगर फिर भी एक माइंडसेट बन जाता है कि हो सकता है फिक्स इंटरेस्ट से ज़्यादा कमा लूँ मैं वहाँ पे। तो उस वजह से भी
कई बार डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर डेंट आता है। तो ये कुछ कारण हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपने को अलग दिखाने के लिए, क्योंकि जो आपने आंसर दिए है वो आपको कमेंट में पढ़ सकते हो और जो मैंने बताया उसको भी पढ़ सकते हो, तो आपको समझ आएगा कि हमने इसको इकोनॉमिक टच दिए है। जब आप एक स्टेट बैंक में पीओ बनने जा रहे हो ना, तो आपकी इकोनॉमिक नॉलेज झलकनी चाहिए आपके आंसर के अंदर, लेमैन आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ही इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना जरूरी है। इसीलिए जो हम न्यूज़ ऑफ द डे डेली वीडियो बना रहे हैं उसको सुनना जरूरी है आपके लिए, वहां से आपको बहुत क्लू मिलेंगे। अब दूसरा पार्ट ये था कि डिपॉजिट ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। अब आप देखेंगे इसमें जितने भी कारण निकल के आ रहे हैं वो उसमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं आ रहा है जो बैंक स्पेसिफिक है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेट। मगर बैंक इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं बढ़ाना चाहेंगे कि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो डिपॉजिट ग्रोथ को तो वो बढ़ावा दे सकते हैं, मगर वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट डालेगा और ऑलरेडी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत प्रेशर में है। तो इसलिए बैंक्स डिपॉजिट लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट बढ़ाना अगर आप वहां पे सोल्यूशन देते हैं तो वो एक व्यवहारिक सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। व्यवहारिक सोल्यूशन क्या माना जाएगा? सरकार इस पे क्या काम करे। सारे एक्शन पॉइंट सरकार के हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इनकम जनरेट हो, और वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट ग्रोथ को प्रॉप अप करेगा। इसी तरीके से किस तरह से हम गुड्स की डिमांड बना सकते हैं उस पर काम किया जाए, किस तरह से अधिक गुड्स बिके भारत के अंदर, उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके ताकि क्रेडिट ग्रोथ हो, और क्रेडिट ग्रोथ होगी तो डिपॉजिट ग्रोथ उसके साथ लिंक्ड है, जो मैंने आपको डिस्कस किया है। तीसरा है शेयर मार्केट की स्टेबिलिटी। अगर लोगों को दोबारा शेयर मार्केट से इनकम आने लगेगी तो उससे भी इनकम लेवल्स बढ़ेंगे और वो भी एक डिपॉजिट ग्रोथ में काम करेगा। और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक गोल्ड को डिस्करेज करना कि लोग उस तरफ अपने पैसे को ना डाइवर्ट करें, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है वो गवर्नमेंट को इसमें देखना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ आपके सामने विचार रखे हैं, इन विचारों को आपको समझना है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम अपने आंसर को डिफरेंट आंसर के शेप दे सकते हैं। और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।